Hello guys, I am Shubham from Shubham Tutorials. In this video, we will solve the GATE Excel PYQs of Zoology. Okay, Zoology section. इस सीरीज के प्रीवियस वीडियो में हमने बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए थे. Okay, so this is the part 2 of this series. So before we start, subscribe our channel and press the bell icon to get notified whenever new videos out. This is absolutely free from your side, but it will help us grow. First 1 mark questions. Okay. During the development of mammalian embryo, yolk sac is formed by which one of the following? Okay, yolk sac किससे फॉर्म होता है? Syncytio, trophoblast? No. Primitive endoderm, that is hypoblast? Yes. Okay, यही आंसर होगा. Question 2. Amniotic ectoderm? No. And embryonic epiblast? No. Right? Inner layer है, so endoderm, primitive endoderm or hypoblast gives rise to mammalian yolk sac. The animals belonging to which one of the following phyla are characterized by segmented body? Segmented body जो segments present होते हैं, these are Annelida, option 1. Not Nidaria, Echinodermata, Porifera, नहीं. Annelid जिसमें segmented body present होती है. डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है तो आता है, अदरवाइज स्किप. राइट. Which one of the following is a post-zygotic isolating mechanism of speciation? See, post-zygotic means what? इसमें two types है, pre-zygotic and post-zygotic. Pre-zygotic means what? Before formation of zygote, and post-zygotic means after formation of zygote. Right. अभी pre-zygotic में zygote का formation होगा ही नहीं. Right? No zygote. पोस्ट zygotic में zygote form होगा, but that will not survive. Okay, now see the options. Behavioral isolation pre-zygotic है. Fertilization failure. See, fertilization failure will not result into zygote. This is also pre-zygotic. Hybrid sterility. Yes, post-zygotic है. Okay, seasonal isolation again pre-zygotic. Right. Hybrid sterility means what? Hybrid जो zygote form होगा, that is a hybrid. This will survive. It will not able to reproduce. Okay, that's why hybrid sterility post-zygotic. Next, desmosomes are intermediate filament based cell adhesion complexes. Yes, cell adhesion complex है. Protein synthesizing macromolecular complex? No. Subcellular organelle? No. DNA protein complex? No. Okay, so desmosomes, basically I will give you a picture. You can make a screenshot. Very important. You can see here junctions है. See here 4 types of junction: tight junction, cell anchoring junction, channel forming junction, and cell matrix anchoring junction. So लेफ्ट साइड पर जंक्शंस बताए हैं एंड यहाँ पर they have shown what exactly they form. Okay, so what they do basically. So tight junction seal gap between epithelial cell. Adhering junction, you can see, connects actin filament AA. Remember, adhering actin, right? Actin filaments connect करते हैं in one cell with the next cell. अभी desmosome, see adherine and desmosome ये cell anchoring में आता है. Okay, you can see here. See this. Left side को right side से relate करो. Desmosome connects intermediate filament C in one cell to those in the other cell, next cell. Right, gap junction allows the passage of small water soluble
मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सेल टू सेल, राइट. चैनल फॉर्मिंग जंक्शन मतलब गैप फॉर्म करता है जिसमें मॉलिक्यूल्स पास कर सकते हैं. अभी सेल मैट्रिक्स मतलब दिस इंटरैक्ट्स विद सेल विद द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स. इसमें एक्टिन लिंक्ड है सेल मैट्रिक्स जंक्शन, एंकर्स एक्टिन फिलामेंट इन वन सेल टू एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स. देन हेमिडेस्मेसोम anchors intermediate filament in cell to extracellular matrix, right. This is important. You can make a screenshot and read this by your side. और एक पिक्चर है यहाँ पे, इसका भी स्क्रीनशॉट करो. वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन सी हियर जैसे क्वेश्चंस बहुत रिपीट हुए हैं इन एवरी एग्जाम, whether it be CSIR, DBT, GATE, ICMR, anything. Huge repetition is seen. Next question. Imagine a population of diploid species in Hardy-Weinberg equilibrium. The population has two alleles for a gene which are A and A, capital A, small a, right? Number of individuals with small a genotype in this population is 1 in 10,000. The frequency of the allele A in the population is, right? Very easy. ए का हमें दिया है 1/10,000. अभी सिर्फ ए का हमें देखना है. जस्ट डू द अंडर रूट. ओके, अभी कट द 2 zeros because it is square root, so that becomes a is equal to 1/100, right. So this becomes 0.01. तो ये a है, राइट. ए है. अभी कैपिटल ए क्या होगा? 1 minus a. ओके, सो 1 minus 0.01 is equal to 0.99. Alright, so this will be the answer. Easy है. Hardy-Weinberg में 2 formulas important होते हैं. I will give to you here the formulas. P plus Q is equal to 1, right. P is a dominant allele, Q is a recessive allele. Then P square plus 2PQ plus Q square is equal to 1. ये भी है. और अगर population base करना है ना, and you should do the multiply by 100, like P square into 100, like this. So that will be give the population of that particular genotype, right. 2PQ stands for heterozygous. This is homozygous dominant and this is homozygous recessive. Okay. Next question. A PCR was set up to amplify up 500 nucleotides long DNA. The D and TPs in the reaction mixture were radio-labeled. Okay. The percentage of radio-labeled single-stranded DNA after 3 cycles will be, okay, after 3 cycles, मतलब 2:3, right. अभी 2:3 क्या होता है? ओके, सिंपल. 2 2 4, 4 2 8. नाउ सी, स्टार्टिंग में सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल है. ओके, सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, एंड दिस इज व्हाट? अनलेबल्ड, राइट. इनिशियली अभी इससे जो मॉलिक्यूल्स आगे डिवाइड होंगे वो लेबल्ड होंगे, राइट. बट स्टार्टिंग में तो अनलेबल्ड है ना. नाउ दिस डीएनए हैज 2 strands, राइट ना. 2 strands. ओके, सिंगल स्ट्रैंड 2 है. तो फर्स्ट साइकिल गिव राइज टू 2 DNA molecules, right.
अभी इसमें सिंपल लॉजिक है, 1 से 2 बना, 2 से 4 एंड 4 से 8, बट दिस इज अबाउट डीएनए ना, 8। तो अगेन सिंगल स्ट्रैंड कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 16। तो 16 आर द सिंगल स्ट्रैंड्स, राइट। सिंगल स्ट्रैंडेड हमें देखना है अभी। अभी रेडियो लेबल देखना है, रेडियो लेबल 16 में सब रेडियो लेबल होंगे, नहीं, स्टार्टिंग के जो 2 है वो अनलेबल्ड है। अंडरस्टैंड केयरफुली, जो स्टार्टिंग में हमने डीएनए यूज किया है वो तो अनलेबल्ड है ना, तो 2 स्ट्रैंड्स आर अनलेबल्ड। 16 minus 2 14, so 14 are labeled, right, from total 16. So now 14 divided by 16 into 100, this goes to 87.5%. Okay, and this is the answer then. I hope this is clear. Now 2 mark questions. Match the following are very easy to solve. Okay, column 1 में molecules है with the properties function in column 2. So these are the antibodies, IgM, Ig, IgA. Immunology से है, easy है. IgE, see IgE is associated with allergy. Q4, Q4 present in option 2, option 4, and Q4 के साथ P5 तो है ही, right? See this IgM, pentameric, right? Contains 10 heavy and light chain. Now जो MHC है, that is involved in antigen presentation. S1, S1 present in option 2, yes. Option 2 answer होगा with the Q4, right? IgA is predominant antibody type in various body secretion, right? Secretory antibody basically, R2. Okay, easy. Next, match the following human diseases in column 1 with the causal organism in column 2. अभी इसमें सिंपल एक ट्रिक है to remember. Chagas disease, okay, this is caused by Trypanosoma cruzi, right? CC ऐसे रिमेंबर करो, ओके, C for Chagas and C for cruzi, right? So Q1 present in option 1 and 4, बाकी eliminate, right? Q1 R4 के साथ है ही, R4 elephantiasis, yes, Wisteria bankrupti, right? अभी ये जो स्लीपिंग सिकनेस है, दिस इज अगेन Trypanosoma brucei, P2, right? So option 4 आंसर होगा, okay. Lyme disease is this, Borrelia burgdorferi. Got it? Match the molecules in column 1 with the correct property function in column 2. This is also very easy. जो siRNA है, this is involved in silencing, R2, right? R2 present in option 1 and option 3, 2 and 4 eliminate. Okay, अब R2 के साथ S3 confirm हुआ, guide RNA, Cas9 mediated genome editing, right? अभी नेक्स्ट इजी क्या है, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 1 Q1 है, आरआरएनए जीन ट्रांसक्रिप्शन Q1, Q1 ऑप्शन 3 में, बाकी P4 भी सेम है, ओके, P4 that is RNA is P, yes, this is a ribosome. Got it? This is how you can solve quickly, right?
what would be the number of genotypes and phenotypes respectively from a cross between genotypes? Okay, दिया है यहाँ पे, assume independent assortment and simple dominant recessive relationship in each gene pair. Okay, अभी टफ लग सकता है, but this is very easy to solve. I will show you how. One by one we should solve, right? One by one. I will write that so that it is much clear. अभी ये हेट्रोजाइगस है, सी ए, राइट? सो ए इस क्रॉस में देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 3 genotypes. ओके, जेनेटिक्स हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है अच्छे से. यू कैन चेक इन द कोर्सेस सेक्शन, राइट? दिस इज अ जेनोटाइप, तो 3 genotypes. अभी फेनोटाइप ए रिलेटेड जो है इसका एक फेनोटाइप होगा एंड इसका अलग, 2 phenotypes, राइट? अभी नेक्स्ट क्रॉस बीबी का क्रॉस सब कैपिटल है, राइट? सो कैपिटल ही होंगे. सो genotype phenotype will be 1 1 सेम, राइट ना? कैपिटल बी ही है. थर्ड क्रॉस सी थर्ड क्रॉस अगेन सेम है, हेट्रोजाइगस दोनों भी पेरेंट्स, राइट? सो यार अगेन सेम लाइक ए there will be 3 genotypes and 2 phenotypes. Okay, C dash मतलब either this or either this, got it? Homozygous dominant और heterozygous. डी का भी सेम है, I will not write again, right? So 3 and 2. Okay, अभी just add करो, sorry not addition, multiplication. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, right? See like this, 3 to 1 to 3 into 3, 27, 27 option 3 बस, राइट ना? एंड 2 तो है ही, 2 4 and 8, और 27 के साथ 8 ही है. न्यूक्लियोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन्स. हिस्टोन्स undergo various kind of modifications by different groups of protein. Okay, modification होते हैं, we know. They are known as histone writers, readers and erasers. Basically enzymes है जो हिस्टोन्स को मॉडिफिकेशन करते हैं. Which of the following is are histone writers? Okay, histone writers. अभी writers क्या करते हैं? एडिशन करते हैं, एडिशन ऑफ मॉडिफिकेशन, राइट? सो हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज, एसिटाइल का ट्रांसफर, यस ये राइटर का काम है. हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज, ये भी राइटर का काम है. Okay, writer means what? It will write means what? It will do the addition of a modification. Histone deacetylase, deacetylase बेसिकली रिमूव करेगा एसिटाइल ग्रुप को, तो ये राइटर का काम नहीं है. दिस इज अ वर्क ऑफ इरेजर. इरेजर का काम है रिमूव करना, हिस्टोन इरेजर का काम है रिमूव करना मॉडिफिकेशन को. एंड जो रीडर्स है, रीडर्स, हिस्टोन रीडर्स that do the recognition, recognize करते हैं मॉडिफिकेशन को. ओके, तो हिस्टोन डीएसिटाइलेज राइटर का काम नहीं है. डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज, ये तो डीएनए से रिलेटेड है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू अ क्वेश्चन. तो 1 and 2 आंसर होगा, एमएसक्यू है, राइट? द एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन is regulated by a transcription factor. Okay,
which of the following techniques can be used to identify the region in its promoter? Okay, promoter region में identify करना है where the transcription factor binds. Okay, see promoter region में suppose this is a DNA. अभी यहाँ पे promoter region है, राइट? तो इसमें हमें साइट का एनालिसिस करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है. तो डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन वी हैव टू नो. ओके, अभी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को अगर डिटेक्ट करना है इन द प्रमोटर रीजन, S1 न्यूक्लियस मैपिंग नहीं होगा, राइट? क्रोमैटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन फॉलोड बाय सीक्वेंसिंग, यस, चिप सीक्वेंसिंग. बेसिकली अगर इसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अगर बाइंड है, उसके अगेंस्ट हम एंटीबॉडी डिजाइन करेंगे दैट विल बाइंड विद दिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड इसको हम पुल करेंगे बेसिकली. देन इसके साथ वो डीएनए भी आएगा वेयर इट वाज बाइंड, राइट? एंड वी कैन do the sequencing of that particular region where the transcription factor has been bound. Okay, then electrophoretic mobility shift assay, EMSA, basically ये भी नहीं होगा आंसर. Why? Because इससे ना मोबिलिटी शिफ्ट होता है, मतलब हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि प्रोटीन बाइंड हुआ है बिकॉज देयर इज चेंज इन बैंड. अगर बैंड नीचे जा रहा है without protein, जैसे DNA only, I will erase this to make it much more clear. and यहाँ पे DNA प्लस प्रोटीन है, तो इस केस में ना ये बैंड ऊपर आएगा बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द प्रोटीन, राइट ना? ये हैवी होगा मॉलिक्यूल, तो ये यहाँ पे मोबिलिटी शिफ्ट हुआ, पहले जो नीचे था अभी ऊपर आया. तो इससे हमें समझते हैं कि डीएनए पर प्रोटीन बाइंड हुआ है, बट वी कैन नॉट डू द सीक्वेंसिंग ऑफ दैट. ओके, इट विल जस्ट टेल द बाइंडिंग assay, राइट? so this will not be for sequencing. हमें रीजन को आइडेंटिफाई करना है केयरफुली, राइट? तो EMSA नहीं चाहिए. S1 न्यूक्लियस भी न्यूक्लियस है तो डिग्रेड करेगा. DNA is one footprinting, yes, this also we can use. अभी DNA is one footprinting को कैसे? सी DNA is one footprinting को न्यूक्लियस प्रोटेक्शन ऐसे भी बोलते हैं, राइट? अगर इफ आई ड्रॉ योर अ DNA, यहाँ पे बाइंड है प्रोटीन, ओके, प्रोटीन बाइंड है, तो इस रीजन में ना न्यूक्लियस एक्शन नहीं वर्क करेगा. ओके, बाकी सब जगह कटिंग हो जाएगी, बट नॉट हियर. दिस विल बी द प्रोटेक्टेड वन, राइट? एंड देन वी कैन डिटेक्ट दिस बाय सीक्वेंस एनालिसिस. यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, प्रमोटर है, and where the protein is getting bind exactly, so that we can detect exactly, right? So this is what DNA is what footprinting. Okay, तो जहाँ पर प्रोटीन बाइंड है ना उस प्रमोटर रीजन पर, वहाँ पे बैंड्स वैसे ही आते हैं, तो दिस इज प्रोटेक्टेड, राइट? इसमें कटिंग होगी नहीं. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ DNA is what footprinting assay. बाकी सब जगह कटिंग हो जाएगी, but this will be retained as it is where the transcription factor is bound to a promoter sequence, right? Which of the following statements in relation to cell movement during isolation in CR gene is are correct? Okay, cell movement के भी बहुत repetition है, repeated ask question, very important concept, you have to remember. अभी delamination, this is basically splitting होता है, leads to the formation of endoderm. तो
दिस इज टू सी आर्चिन, राइट? तो ये आंसर नहीं है इसका. इंग्रेशन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ mesoderm. Yes. Okay, I will show you how this you can answer correctly basically, right? First, I'm telling you correct options. Involution leads to the development of ectoderm. No. Invagination leads to development of endoderm. Yes. So option 2 and option 4 answer होगा. Got it? How I answer this? Basically ये single chart से answer हो जाता है. This is very important. Make a screenshot of this too. Okay, you can see here. I will highlight invagination. ये description भी बहुत important है, right? एग्जाम्पल में ही दिया है सी आर्चिन एंडोडम. हुआ करेक्ट. इन्वोल्यूशन, दिस इज गिवन राइट टू एम्फीबियम मीजोडम, तो नॉट राइट टू सी आर्चिन. तो नेक्स्ट है अगेन इंग्रेशन. इंग्रेशन सी आर्चिन मीजोडम रिलेटेड आंसर मिल गया. सिर्फ इसी ऑप्शन से आंसर मिल गए, ओनली फ्रॉम द टेबल. डिलैमिनेशन स्प्लिटिंग होता है. दिस इज डूइंग द हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन इन बर्ड्स एंड मैमल्स. बहुत बार इस टेबल से क्वेश्चन एज इट इज आए हैं, राइट? एंड वेरी इजी टू आंसर इफ यू नो दिस. एपिबॉली में एक्टोडर्म फॉर्मेशन होते हैं. इन सी आर्चिन, टर्निकेट्स एंड amphibians. Tunicates, tunicates, you can say anything, right? But description is also very important. You should read this, memorize this very well. Next question, which of the following genetic disorders are caused by trinucleotide repeat expansion? Trinucleotide repeat expansion means what? 3 nucleotides repeat होते हैं in the DNA. तो इसमें हंटिंगटन डिसीज, यस. CAG का नंबर इंक्रीज होता है. CAG ट्राइन्यूक्लियोटाइड. बीटा थैलेसीमिया नो. फ्राजाइल एक्स सिंड्रोम, यस. इसमें भी ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सटेंशंस होते हैं. CGG रिपीट. सिस्टिक फाइब्रोसिस नो. डायरेक्ट क्वेश्चन, इफ यू नो नो, अदरवाइज नो. ओके. Last question, the mother and the father of 5 children are carriers, the heterozygous of an autosomal recessive allele that causes cystic fibrosis. The probability of having exactly 3 normal children among 5 is, okay, see, very important. Autosomal recessive बोला है and both the parents are carrier, means again this cross, इसमें AA होगा, राइट? अभी ये तो नॉर्मल है, ये होगा डिसीज, राइट? सो डिजीज की प्रोबेबिलिटी 1/4, नॉर्मल की प्रोबेबिलिटी 3/4. ओके. नाउ एग्जैक्टली 3 नॉर्मल दे आर आस्किंग, मीन्स व्हाट? 3 नॉर्मल 3/4 3 times 1/4 2 times. Okay, when I say 3 normal out of 5 मतलब 2 अफेक्टेड ना, तो हमें दोनों को कंसिडर करना होगा, राइट? अभी इसमें और एक फैक्टर क्या है, 5 places are there. If I draw boxes 5, अभी इसमें n normal, we will say n. 3 normal means n1, n2 and n3.
Okay, they will occupy the different places, right? N1 को 5 options है, right? N1, N2 के लिए 4 options है if N1 is occupied. Understand properly. And N3 को 3 options है if N1 and N2 are occupied. Okay, so this is basically what arrangements or combinations you can see. Now what we can do, N1 5 positions occupy कर सकते हैं, right? N1, N2 के पास 4 positions है. If I write like this, suppose this is a first order, but compulsion नहीं है ना, ये ऐसा ही रहेगा. This can be anyhow, like N1, N2, then A1, A2, N3. Okay, then if I say N1, A1, A2, N2, N3, right? Then A1, A2, N1, N2. ओके, सो ये ऐसे अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे. So this gives rise to 10 combinations, right? 10 combinations. By formula, you can solve like this. I will tell you 5, 4, 3, 3, 2, 1. Okay, why so? Because ये N1 है, N1 के जगह पर N3 आ सकता है, right ना? As well as N3 की जगह N1 आ सकता है, right? So there are sequences present. 60/6 use 10. ओके, अभी ये जो हमने बनाया है यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करो 10 से, so then it goes to 0.20. ओके, 0.26 ये होगा आंसर. ओके, अगेन आई विल गिव यू अ समरी. नॉर्मल की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम दिस क्रॉस इज 3/4. अभी इसका 3 नॉर्मल चाहिए हमें आउट ऑफ 5, राइट? सो 3 नॉर्मल, इसके लिए हमने 3 के साथ इसको रेस टू किया एंड देन अफेक्टेड का भी देखा, बिकॉज अगर 3 नॉर्मल चाहिए तो 2 अफेक्टेड है, इसके लिए अफेक्टेड की प्रोबेबिलिटी है 1/4. दैट वी डिड स्क्वायर and after that multiply with the combinations, order, basically order, right? Now order we have seen like this as an example. So total 10 combinations are possible. We multiplied with that and then answer is 0.26. One more I will add on here, just erase. If I say order n n n a, then n n a n, okay, then n a n a n, right? Then n a n a n. Okay, these are the 5 combinations. अभी ये n1 है, n2 है, n3 है, right? अभी
इंटरचेंज हो सकता है ना अलग अलग पोजिशंस पर. तो अगेन सेम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइव कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल. सपोज इसमें N1 है, इसमें N2 है, इसमें N3 है. इट कैन बिकम N3 अगेन. N1, N2, N2 ही रहेगा. N1. Otherwise, N1 it can be, N2 it can be. Right now, so you can check by your side and then you can get the answer. Okay? तो टोटल हमने कितने सॉल्व किए क्वेश्चंस इसमें? तो इस वीडियो में हमने 1 मार्क के 6 क्वेश्चन सॉल्व किए, राइट, एंड 2 मार्क्स के 9 क्वेश्चन सॉल्व किए. टोटल 24 मार्क्स का सॉल्व किया हमने. ओके, so that's it for this video. I hope this video helps you. If you find this video helpful, do let us in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to our channel and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.